Good evening, everyone. You guys are watching the T2 Pro Scrims brought to you by Smoke Esports. Grind to the best. Or maybe it's grind for the best. My English is just amazing right now. Just as you all are out there, guys. We are playing the first game of the evening. Erangel is the map. The plane going from the eastern part to the western part. No, that's western to the eastern part. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जॉर्जो कंटेनर्स के ऊपर भी हमें कई सारी टीम्स जाती हुई दिख रही हैं और ये तो काफ़ी ज़्यादा अर्ली मैच के उसमें ही ऑलमोस्ट हमारे पास 4 से 5 टीमें जॉर्जो कंटेनर्स में है जो कि आपस में लड़ रही हैं। यहाँ पे टीम नंबर 20, 16, टीम 10 और टीम नंबर 21। यहाँ 180 लाजरस को हम स्पेक्टेट करते हुए इस टाइम पे, जिनके आसपास हमारे दिख रहे हैं मेंबर्स। टीम नंबर 21 के मेंबर्स, टीम 180x का एक मेंबर अभी अभी हुआ है हमारे सामने फिनिश। लाजरस की कोशिश थी एक रिटर्न नॉक देने की, लेकिन उसमें नहीं हो पाए वो कामयाब। यहाँ पे 180x के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए। टीम 16 जो कि है ILX, उनके भी एक मेंबर हो चुके हैं नॉकआउट, जिनको अभी मिल रहा है रिवाइव सोनू की ओर से। यहाँ पे टीम नंबर 16 के पास बहुत ज़्यादा अच्छी लूट है नहीं अभी, ना हेलमेट्स वगैरह कुछ, और कुछ एक के पास तो गन भी नहीं थी, तो उनको रहेगी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे 180x के लेजर्स को फेस करने में, और ना ही उनके पास अभी हेल्थ किट्स। यहाँ पे और गोलियां चलती हुई, लियो BTC हुए यहाँ पे नॉक। पीछे से टीम नंबर 21 के मेंबर्स कार का इस्तेमाल करते हुए अभी यहाँ पे सुमी ने लिया है, एक किल करा है अपने टीममेट को अवेंज। यहाँ पे अगर देखा जाए अभी भी ये 3 टीम्स हैं आसपास, तो at the end of the day it just matters which team comes out on the top in this fight, because the loot will be divided among many different people, many different crates, so they'll not be able to secure some good amount for themselves. Meanwhile सूर्य को यहाँ पे अगर देखते हो, ये जा रहे हैं टीम नंबर 16 की ओर। मुझे नहीं पता इनको है आइडिया कि वहाँ पे टीम 16 के तीन मेंबर्स है या नहीं। अभी अभी इन्होंने किया एक को स्पॉट, लियो BTC भाग रहे हैं बिल्कुल 0 HP में, उनके पास कोई हेल्थ किट नहीं है, और आई डोंट थिंक सो ही हैज एनी गन एज वेल। नो, ही हैज अ गन बट he's got no HP, he's got no armor right now. So the only thing that can save him will be the surprise element, and he has alarmed Surya that he knows his position. So काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पॉट में है फिलहाल अभी टीम नंबर 16, और टीम नंबर 21 के भी 2 ही मेंबर्स आए। 3 टोटल आए थे, जिनमें से एक हो चुका है फिनिश। टीम ILX के तीनों लोग अब घूम रहे हैं साथ में। यू नो, that's basically the best strategy you can use, especially when your HPs are extremely low and you do not have some decent amount of loots, and that's going to be Surya taking out BTC as well as himself getting knocked in the process. यहाँ पे 180 और ILX के बीच में हो चुकी है बहुत तगड़ी फाइट शुरू। 180 के सिर्फ 2 मेंबर्स, ILX के सिर्फ 2 मेंबर्स बचे, जिनमें से एक सुमी वो हो रखे हैं डाउन। सोनू दे रहे हैं उनको रिवाइव। I believe he really should use that energy drink as soon as possible. यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्रेनेड, लेकिन सूरजा ने खुद के ही मेंबर को किया नॉकआउट। That was basically not the case. Lazarus की यहाँ पे 0 HP, बिल्कुल he's basically 1 or 2 shots in for now, using the Bison. And you know, Bison is basically a gun in which you want to have a comparatively prolonged fight. Okay, like it's not a gun that can knock out the enemy right when you start firing it. You need to connect a few extra shots as compared to any M4, AKMs, M762 or any other guns. और यहाँ पे टीम ILX के मेंबर्स को किया है फिनिश। टीम 21 के दोनों मेंबर्स ने 2 फिनिश पॉइंट्स इनको मिलते हुए, और यहाँ पे अब सिर्फ 4 मेंबर बचे हैं टोटल। अगर जॉर्जो कंटेनर्स की हम बात करें तो 2 मेंबर्स टीम 180x के और 2 मेंबर्स टीम नंबर 21 के। यहाँ पे काफ़ी लंबा फायर करते हुए फैंटम
शॉट्स थोड़े बहुत कनेक्ट किए थे, बट द डैमेज वॉज नॉट इनफ टू नॉक द मेंबर ऑफ टीम नंबर 21 डाउन. नाउ जा रहे हैं फ्लैंक पे, चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन. अच्छा मॉली किया था बट डिड नॉट कनेक्ट. यहाँ पे एक और मॉली करते हुए ब्लेजिनो और अंकुर दोनों खेल रहे हैं बिल्कुल सेफ इस पॉइंट पे, अपनी एचपीस पूरी करते हुए. ब्लेजिनो जा रहे हैं फ्लैंक पे, कोशिश करेंगे साइड से फैंटम के ऊपर एक शॉट लेने की. और यहाँ पे फैंटम ने किया जीरो को फाइनली नॉक. जीरो को नहीं पता थी फैंटम की पोजीशन कहाँ है और अब वो होंगे फिनिश. अब यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है 1v2 की टीम 180x के पास. यहाँ पे मिल चुकी है उनको एक एडवांटेज. फैंटम का काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे आराम से, और जैसे ही उनको दिखा जीनो ऑफ पोजीशन है, ही इज ऑफ गार्ड, ही जस्ट वेंट एंड फिनिश्ड हिम ऑफ राइट अवे. और अब यहीं पर अगर हम देखा जाए तो टीम नंबर 10 के मेंबर्स भी आ चुके हैं. BTY एम गॉड के टीम के मेंबर्स जिनको यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं करना. ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट हैंडल दोस 3 प्लेयर्स एट मैक्स, एंड आफ्टर दैट they already have got the loot from the Georgia city. So they're basically the ones who are in the best position in this match. यहाँ पे लाजरस को अंकुर की पोजीशन दिखती हुई, देखना पड़ेगा क्या डिसीजन लेते हैं लाजरस. ओके, आई बिलीव अंकुर हैज स्पॉटेड लाजरस एज वेल. यहाँ पे फैंटम को अंकुर की पोजीशन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है. फैंटम भी आराम से बैठे हुए हैं बिल्कुल, और ये अंकुर को ये कोशिश तो इनकी थी कि अंकुर को ये करेंगे सैंडविच, लेकिन यहाँ पे सीन तो कुछ और ही लग रहा है. अंकुर यहाँ पे अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे हैं, देखना पड़ेगा बच पाते हैं या नहीं. He comes back in front of them and then he is finally taken out. Meanwhile, Team 180 is taking fires from the members of team number 10. यहाँ पे एम गॉड ने दिया पहला नॉक, और फैंटम को अब जाना पड़ेगा जल्दी से रिवाइव देने के लिए. अगर वो नहीं कर पाए तो फिर 180x का यहाँ हो जाएगा खात्मा, एंड दिल हैव टू they'll not get a pretty good position in the leaderboard right now because we still have 16 teams remaining. यहाँ पे देखना पड़ेगा फैंटम क्या क्लच कर पाएंगे, because the clutch seems extremely difficult right now. यहाँ पे हमें फ्लैंक पे जाते हुए दिख रहे हैं. एम गॉड अभी भी ऊपर ही बैठे हुए, ही जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द पोजीशन ऑफ टीम 180x. Plus he's having, he's lying down at a very good position where he cannot be easily spotted. Even though if he's spotted, he will not be shot down pretty easily. और ये मॉन्स्टर का इतना ज्यादा ही अच्छा स्प्रे था कि एक ही लाइन में सीधा दोनों मेंबर्स को वो कर गए फिनिश. कवर फायरिंग देने की कोशिश करी थी 180x के मेंबर्स ने अपने टीममेट को, ऊपर वो नहीं दे पाए. और यहीं अगर हम गटका की तरफ देखें, यहाँ पे टीम नंबर 19 टीम EA को हम देख सकते हैं. यहाँ पे लेजर को हम स्पेक्टेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे. टीम नंबर 8 के मेंबर्स भी यहीं पर हैं, जिनमें से एक अभी अभी रॉक्स आदि वाइटी हमारे सामने हो गए हैं फिनिश. आर्टेमिस, आयुष, ये दोनों के दोनों अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं. लेजर भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे. 3v3 की सिचुएशन हो चुकी है. यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी टीम इनमें से निकल के आएगी विजेता. काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलते हुए, कोई रेकलेस प्लेज नहीं था. जस्ट ट्राइंग टू थ्रो इन द ग्रेनेड्स, थ्रोएबल्स एंड ट्राइंग टू गेट सम नॉक. यहाँ पे आयुष को थोड़ा सा डैमेज पड़ता हुआ, जो वापस हील अप हो जाएंगे.
और यहाँ पे हो चुकी है फायरिंग चालू। M4 का काफी अच्छा स्प्रे देने की कोशिश। मलाना क्रीम यहाँ पे बहुत अच्छा डैमेज देते हुए टीम ईए के मेंबर्स को। आई बिलीव इट वाज लेजर, जो कि अब अपनी एचपी वापस से बढ़ाएंगे और फिर फाइट लेने की कोशिश करेंगे। और मलाना क्रीम के रूम में की जाएगी काफ़ी ज़्यादा फ्रैगिंग, तो इसलिए इज जस्ट रिट्रीटिंग टू सेफ्टी, ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को कोई एडवांटेज ना दे। यहाँ पे आयुष के पास आया है एक ग्रेनेड, पर वो काफ़ी अच्छे कवर में उस दीवार के, अगर वो थोड़ा सा भी बाहर होते तो पड़ सकता था उनको बहुत ज़्यादा डैमेज। यहाँ टीम नंबर 8 के मेंबर्स काफ़ी काफ़ी अलग अलग बिल्डिंग्स में जाते हुए, ताकि तीनों एक ही बार में नॉकआउट ना हो सके। टीम नंबर 19 अभी भी चेस पे ही है। आयुष ने पोजीशंस तो देख लिया टीम नंबर 8 की। तो प्लेइंग इट प्रिटी सेफ, दे आर प्लेइंग इट वेरी वेरी सेफ। यहाँ पे फ्लैंक करने का भी कोई अच्छा तरीका दिख नहीं रहा है, सिर्फ ग्रेनेडिंग से ही कोशिश कर चल रही है कि किल्स वगैरह निकाल सके ये। यहाँ पे जैसे ही एक टीम को नहीं मिलेगा एक नॉक, वो सीधा मारेंगे रश दूसरी टीम के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना ही पड़ेगा। और यहीं पे अगर हम सर्कल को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्दर्न ओरिएंटेड सर्कल बनता ही जा रहा है बार बार। अभी सेवेरनी इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी दैट्स इन द सर्कल। इवन यासना पोलियाना भी है वहाँ पे, जो कि अब सारी बाहर ये जो टीम्स है सब सर्कल में जाने की कोशिश करेंगी। जो फाइटर स्पेक्टेट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अकरिंग आउटसाइड द सेफ जोन। So let's see what team EA decides, if they want to stay and fight or they just want to jump back to the safe zone. And team EA has decided that they're going to abandon this fight for now, and they will meet them again in the safe zone after some time. Or maybe not, maybe not. Ayush is probably just trying to get a good angle. He's trying to get some flank in. And since they're outside the safe zone, they have absolutely no worries, because बहुत ज़्यादा अनलाइकली होगा यहाँ पे उनको कोई और टीम एनकाउंटर करना। आयुष को नहीं मिल पा रहा है कोई एंगल, पर बैंक शॉट की एचपी हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं नॉक। देखना पड़ेगा मलाला क्रीम क्या जाके रिवाइव दे पाएंगे। यहाँ पे लेज़र को भी देख चुके हैं, ग्रेनेड तो काफ़ी अच्छा किया था। एंड जस्ट एज आई सेड, यहाँ पे अगर एक बंदा हुआ नॉक तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्लैम इन आएगा दूसरी टीम का, एंड दैट्स वन फिनिश ऑलरेडी। मलाना क्रीम यहाँ पे हो चुके हैं आउट। Harshit is the only one remaining from his team, and he is deciding to flee the battlefield. That's what their team has decided कि यहाँ पे उन्हें नहीं लड़ना है, और बिल्कुल भी they have decided कि उनको लीडर बोर्ड में चाहिए एक ढंग की पोजिशन। Or maybe Harshit just wants to get a good angle so that he can knock out all three of them. Seems pretty difficult though, very difficult honestly. Let's just wait it out and see what the situation gets. Meanwhile, looking inside the safe zone, his team number 14, 2 members already down, make it 3 members already down, and they're taking heavy firing from 2 different directions. Team number 7 as well as team number 10, both of them, they're just there, and that's some heavy firing coming in. Team number 10 के members वहाँ की फाइट जीतते हो, उसके बाद अब यहाँ पे आ रहे हैं स्लैम इन करते हुए। टीम 14 के मेंबर स्मोक वॉल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको निकलना है इस जगह से। एम गॉड यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज लेते हुए। लुकिंग एट द करंट सिचुएशन ऑफ ऑल दीज 3 टीम्स, एक बहुत ही अच्छा नॉक दिया पैब्लो ने एम गॉड को, और अब एम गॉड इज द वन हु इज इन ट्रबल, बिकॉज टीम नंबर 10 के मेंबर्स को जाना पड़ेगा, एंड द एरिया इज प्रिटी ओपन। दैट्स गोइंग टू बी मॉन्स्टर टेकिंग इन सम हेवी फायरिंग, दो ही जस्ट क्रिएटेड अ कवर, अ डिसेंट इनफ कवर।
so that he can jump in and give the revive. Pablo will probably try and reposition himself. पर यहाँ पे टीम नंबर 10 दो अलग अलग फ्रंट्स पे अलग अलग फाइट्स लेती हुई एंड देर काइंड लूजिंग बोथ ऑफ देम एंड यहाँ पे वुल्फ ने बहुत ही अच्छा नॉक दिया. मॉन्स्टर हुए थे रिवाइव पर वो फिर से हो चुके हैं डाउन. टीम नंबर 10 सीम्स टू बी इन ट्रबल. यहाँ पे एम गॉड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे नॉक. एक और नेड आ चुका है, ये किया नॉक. एम गॉड विल बी टेकन डाउन. टीम नंबर 10 का सिर्फ एक ही मेंबर बचा है. तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी दो अलग अलग फ्रंट्स पे फाइट लेने की, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम. और बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है ये स्ट्रैटेजी उनके लिए और पूरी टीम हो गई है यहाँ पर फिनिश. टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 7 कमिंग आउट विक्टोरियस इन दैट फाइट. पर यहाँ पे टीम 7 द प्रोबेबली ट्राइंग टू जंप इन टूवर्ड्स टीम नंबर 14. यहाँ पे दिया है काफी लंबा M4 का स्प्रे. रेड डॉट के साथ नहीं मिल रहा उतना अच्छा विजन और करिए अपनी पोजीशन रिवील. पर टीम 7 सिंस दे ऑल 4 men strong, they've got the advantage against team number 14 right now. Then X यहाँ पे एक और जोन हमें बनता हुआ दिख चुका है. सेवेरनी इज स्टिल इनसाइड द जोन. काफी टीम्स है यहाँ पे जो जोन के बाहर है और वी स्टिल गॉट 10 टीम्स रिमेनिंग. सो वी कैन सी प्रीटी एग्रेसिव फाइट्स the more we'll reach the late game right now. So that's going to be the situation. After just a few minutes, we will be seeing very, very active safe zone fights. और यहाँ पे देखा जाए तो एक और टीम आ चुकी है. टीम नंबर 19 के मेंबर्स, टीम EA के मेंबर्स यहाँ से जाते हुए हमें दिख रहे हैं. बट दिल प्रोबेबली डिसाइड टू स्टे बिकॉज टीम नंबर 7 ने यहाँ पे कर दी है फायरिंग शुरू एंड दे विल बी द वन टेकिंग फाइट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ टीम नंबर 9. और उन्होंने एक नॉकआउट ऑलरेडी दे दिया है. यहाँ आयुष भी हो जाएंगे नॉकआउट थे. ये ओपन में टीम 14 के मेंबर्स है जिन्होंने किया नॉक. टीम 19 टेकिंग आउट अदर मेंबर्स एज वेल. यहाँ आर्टेमिस बहुत अच्छा स्प्रे करते हुए अपनी M4 का जलवा दिखाते हुए ऑलरेडी एक बहुत अच्छा नॉक कर चुके हैं टीम नंबर 19. अब अपने दूसरे मेंबर को रिवाइव करने जाएंगे. यहाँ पे आयुष हो रखे थे डाउन, ब्लीड आउट पोजिशन. Don't tell me it's a smoke. Yeah, that's a smoke. So that's a relief. Some pretty good coordination coming out from Team EA. I really feel like that they might actually win this game if they keep on playing it extremely well. यहाँ टीम नंबर 14 बहुत ज़्यादा ही अच्छे शॉट्स मारती हुई. आर्टेमिस की HP हुई थी कम पर वो हो चुके हैं सेफ. और यहाँ पे ब्लेज आखिरी मेंबर बचे हैं अपनी टीम के. कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बदला लेने की, एटलीस्ट एक अच्छा फिनिश निकाल पाए. लेकिन टीम 19 हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ. दे हैव डिसाइडेड दे गोना जंप इनटू द जोन. दे विल बी सिक्योरिंग अ सेफ पोजीशन देयर. मीनवाइल टीम 14 यहाँ पे ब्लंट पैब्लो यहाँ पे लेते हुए फाइट टीम नंबर 25 से और ये जीत चुके हैं फाइट टीम स्मोक के अगेंस्ट. माय गुडनेस, that's holy smokes. That's holy smokes, man. दो मेंबर टीम स्मोक के उन्होंने किए वाइप आउट यहाँ पे अभी. तो स्मोक एनकोर और स्मोक गोकू हैं जो बचे हुए हैं अपने टीम के. देखते हैं क्या वो बदला ले पाएंगे अपने टीममेट्स का या फिर they'll be wiped out in the process as well. We still have 10 teams remaining, 25 alive players. यहाँ पे ब्लू जोन आता हुआ टीम स्मोक इज द ओनली टीम दैट इज आउटसाइड द सेफ जोन फॉर नाउ. सो दे हैव टू जंप इन. स्मोक इन कोर के पास अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे नहीं है उन पे अच्छी हीलिंग. सिर्फ 6 बैंडेजेस लेके चल रहे हैं. नो
गुड अमाउंट ऑफ हीलिंग फ्रॉम हिम, वाइल गोकू के पास भी सिर्फ एक ही फर्स्ट एड है. सो आई डोंट थिंक सो दे हैव अ डिसेंट लूट फॉर टेकिंग वन गुड फाइट. Finally, they're also deciding to jump back into the safe zone, looking at another zone that has formed team number 3 near team. And there are so many teams around each other, 19, 11, 9, 7, as well as team number 3, जिसपे सबसे अच्छा हाथ रहेगा टीम नंबर 3 का, बिकॉज द बेसिकली गॉट ऑल 4 members इन. यहाँ पे अभी अभी हमने टीम नंबर 19 की तरफ से एक फिनिश देखा था. वेल, वी डिड नॉट सी द फिनिश, वी जस्ट हर्ड द शूटिंग देयर. So yeah, that's if you guys count it in, but whatever. Meanwhile, looking at the situation, यहाँ टीम 9 के सिर्फ एक ही मेंबर है, and he has to play it pretty safe because still 9 more teams remaining. Therefore, there are उन्हें अभी भी थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा ताकि अपनी टीम के लीडर बोर्ड पे अच्छी पोजीशन लेकर आ पाए और कुछ पॉइंट्स जमा कर पाए. यहाँ पे ईए लेजर अभी अभी होए नॉक. जरा सी अगर आपकी मुंडी दिखी खिड़की में से आपको पड़ेंगे शॉट्स. काफी अच्छी शूटिंग देखने को मिली हमें टीम नंबर 3 के द्वारा. We will still probably see the guerrilla style warfare coming in from this team. Not too aggressive. We'll just try to get some knocks. क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स एक दूसरे के अराउंड है. वहाँ डेविल ब्रो को पड़े काफ़ी शॉट्स. यहाँ पे विल हैव टू यूज सम मिड किट्स इन द प्रोसेस. टीम नंबर 3 यहाँ पे काफ़ी शॉट्स लेती हुई. ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती हुई. शॉट्स एक्सचेंज ज़रूर हुए थे यहाँ पे, पर ये उतना ज़्यादा डैमेज नहीं लेती हुई. देव गॉट वेरी गुड लूट राइट नाउ. देव वन फाइट, सो loot is something they've got plenty of it now. यहाँ पे ब्रैक्स ने थोड़े से शॉट्स मार के रिवील करी थी अपने पोजीशन. सो टीम नंबर 3 they've now they're diverting their attention towards the member of team number 9 as well, because they do not want their game to be spoiled by one person. पीछे से गोली पड़ने का मतलब है that's going to be some trouble for team number 3 as well as Brax. क्योंकि Brax can always end up ruining the game of 1 or 2 somehow. Meanwhile, these small firings will still occur between these teams, but I'm kind of doubting that they're going to get a knock or maybe some finishes in that process, because that's going to be team number 4 as well joining the fight. यहाँ पे लेते हुए वो फाइट क्विज एजियो अभी अभी एक बहुत अच्छा नॉक देते हुए टीम 19 के मेंबर्स को. यहाँ पे प्रॉबेबली टीम नंबर 19 हो चुकी है वाइप आउट, जो कि खेल रही थी बहुत ज़्यादा अच्छा. सिर्फ आयुष बचे हैं अपनी टीम की तरफ से. क्या वो 1v4 क्लच निकाल पाएंगे? सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट दो. And I believe he's probably offline at this point, so that's going to be very unfortunate if that's the thing. No, he is not offline, he is still there. Team number 4, they're probably going to put in some grenades out, but
only after their own members are revived in the process, because team number 3 बहुत अच्छी फायरिंग देती हुई यहाँ पे हर जगह होती हुई हमें फाइट्स दिखाई दे रही है इस टाइम पे। स्मोक गोकू यहाँ पे देखा जाए तो he's near that drop, and he's got two teams, one in front of him and the other one at the top of that hill. So that's going to be him having to take care of the members of team number 11. Let's see what he decides to do. He's got the better situation. He's got the better position right now. He is in the open though, so he will be targeted by a lot of teams. That is one thing. And there he goes, being shot down from two different positions. Okay, I did get that on cam. I'm gonna enjoy teasing Goku with that though. लो एम करके जो ग्रेनेड उन्होंने फेंका था वो ही फट के उन गाड़ियों को फोड़ गया, एंड ही डाइड हिमसेल्फ नॉट बिफोर डीलिंग, not before failing to deal some damage to team number 11, but I believe they've actually given the revive to their members. So yeah, just 6 teams remaining, 16 players alive, 4 members of team 3, 4 members of team number 4. So they're the ones having the best hand in the current brawl situation, where the zone is in between these two groups of people. यहाँ पे टीम नंबर 23 के मेंबर्स जोन के हैं, ये काफ़ी करीब, और जोन है बहुत ज़्यादा ओपन। तो आईटी की टीम के जो 2 मेंबर्स है, देर नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट ऑफ दैट स्मॉल कैंप, दैट स्मॉल बिल्डिंग। यहाँ पे टीम 23 काफ़ी अच्छी पोजीशन लेती हुई, और काफ़ी लॉन्ग रेंज शॉट से इनको पड़ती हुई गोलियां क्विज एरो ने किया है इनको नॉकआउट बहुत ही ज़्यादा दूर से, कि M4 का किया इस्तेमाल। 6x M4 मैन, सिंगल फायर 6x M4। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया टीम नंबर टीम नंबर 11 के मेंबर IT स्टार लॉर्ड ने, किया उनको फाइनली फिनिश, और जो सिचुएशन के अगेंस्ट थी उसको टर्न किया अपने फेवर में। पोकेमॉन यहाँ पे अकेले बचे हैं अपनी टीम के, देखना पड़ेगा क्या वो नॉक दे पाएंगे। यस, नॉक ही विल प्रोबेबली एंड अप फिनिशिंग स्टार लॉर्ड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पर देखा जाए तो टीम नंबर 6 के मेंबर्स भी आ चुके हैं। रेड हॉक विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ देम, but I doubt that's going to be the scene, because team number 6 have got 3 members. Manpower, additional manpower means you have got more bullets firing towards your opponent, and that's going to be him taken out. ब्रैक्स की यहाँ पे जैसे ही हमने बात करी थी, उन्होंने फिर से एक और नॉक दिया है टीम नंबर 3 के मेंबर को। देखना पड़ेगा क्या वो फिनिश करने भी आते हैं। नहीं, वो फिनिश करने नहीं जाएंगे। 4 टीम्स, ओनली 4 टीम्स रिमेनिंग, नॉट टीम 6, टीम 3, टीम 4। यहाँ पे एक और नॉक दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लेंगे यहाँ पे किल। ब्रैक्स ने किया काफी अच्छा प्ले यहाँ पे, बट ही इज इन मिडल ऑफ 3 टीम्स नाउ। he'll have to play it really safe, क्योंकि उनकी पोजीशन यहाँ पे हो चुकी है रिवील। वो किसी भी साइड अगर जाएंगे तो उनको पड़ेंगी गोलियां। क्विज की टीम भी गाड़ी को इस्तेमाल करके करेंगी अपनी पोजीशन को चेंज। उनकी टीम में है 4 मेंबर्स जिंदा भी। टीम नंबर 3 के सिर्फ 2 मेंबर्स बचे हैं, दे आर आउटसाइड द जोन नाउ, they'll have to jump in। टीम 6 यहाँ पे जोन कैंपिंग करती हुई दिख रही है, उनके भी 2 ही मेंबर्स हैं। देखना पड़ेगा टीम 3 और टीम 6 के बीच में अब जो फाइट होगी उसमें कौन जीतेगा। ये किया बहुत ही ज्यादा बढ़िया नॉक, एंड दैट इज गोइंग टू बी टीम नंबर 6 गेटिंग द विन। येप, दैट्स गोना बी टीम नंबर 6। काफी लो एचपीज हो गई थी इनकी। कॉकरोच ने काफी अच्छा सस्टेन करने की थी कोशिश, पर यहाँ पे वो करेंगे उनके गेम का खात्मा। टीम क्विज टेकिंग द पोजीशंस इनटू द जोन यूजिंग द व्हीकल, गेटिंग द बेस्ट प्लेस फाइनली। और यहाँ पे किया इन्होंने व्हीकल वॉल क्रिएट। सो ब्रैक्स भी यहाँ पे देते हैं काफी बढ़िया फायरिंग। देखना पड़ेगा टीम क्विज क्या डिसाइड करती है। स्मोक वॉल्स तो करी है इन्होंने क्रिएट,
और ब्रैक्स यहाँ पे अभी भी बहुत ही बढ़िया फाइट लेते हुए टीम नंबर 6 के मेंबर्स को बहुत ज्यादा अच्छा स्प्रे देते हुए, एंड दैट्स गोइंग टू बी टीम क्विज गेटिंग द विन। हमें ये देखना है सेकंड पे कौन आया। सेकंड पे आई है टीम आर यू। ब्रैक्स इतना ज्यादा स्मार्टली खेल गए पूरे गेम को दैट he was single since I believe 10 to 15 teams were remaining, and from that position, he got his team to second place. टीम नंबर थ्री का टीम नंबर थ्री के एक दो मेंबर्स को उन्होंने किया आउट, एंड देन ही वेंट फॉर द टीम आई फॉरगॉट द नंबर, बट या जिनकी अभी थर्ड पोजीशन आई है उस टीम के भी मेंबर्स को उन्होंने किया था बाहर. सो जस्ट सम amazing play coming out from Drags though. But then again, Team Quiz यहाँ पे perfect positions लेती हुई, and at the end of the day getting the win for their team. They knew when they had to jump back into the safe zone. They went there, they got the perfect vision, created those smoke walls. काफी अच्छी strategies का इस्तेमाल करते हुए Team Quiz यहाँ पे हमें जीतती हुई दिखाई दी. I'll just take some quick screenshots of the results. That's going to be it. So let's move forward for the stars of the match. It's going to be Brax going all out with 5 finishes, while the best companion goes to ILX Sonu, giving 3 revives to his team. And the finisher is going to go for Quiz SU, securing 3 finishes, 2 assists, 10,041 distance travel, 1732 survival time. So that's going to be it for this match, guys. But we still got another match remaining. So you need to make sure to jump back in 15 minutes so you can spectate that next match as well. We will be right back, guys. Stay tuned.
So, welcome everyone for the second game of the evening. It's going to be in Miramar. You guys are watching the T2 Pro Scrims brought to you by Smoke Esports, grind for the best. So just as I said, we are in Miramar, guys, and the circle is a northern mid-oriented circle right now. Hacienda del Petron, San Martin, etc. All these places are inside the safe zone now, and we can clearly see that a lot of teams have decided to drop early in this map. The plane was from south to north, so we are seeing quite a few teams in the southern part of the map. And right now, we can see team number 3 somewhere around the members of team number that's going to be 5. यहाँ पे अभी अभी एक नॉक होते हुए हमको दिख चुके हैं. चिंटू वाइटी अकेले बचे हुए हैं अभी. There are a team of 4, but they've all been just divided 3-2-3-2. I mean 2 and 2. Wait, what? You can do that? What? Why do I always learn new things when I'm streaming for you guys? Like, since when did this happen? Like, it's not even his own teammate that's carrying him. And that's so funny to watch. Damn, AJ Parmar, man. No way. Jeez. That's so funny. Alright, so that's probably gonna give the advantage to team number 3 right now, since they're basically carrying one of the men, and there's absolutely no one around Parmar right now to actually help him out in this situation. They're just carrying him, having fun. Let's let's see from Fraggy's perspective. Okay, it's basically the same.
Okay, so they finally managed to finish him off. Oh shit, that was so funny. All right, so moving on from that, guys, we are jumping back into the current situation of the game. It is 62 players alive right now, 17 teams. That's we're looking at team number 21, team NNE right now. They are around teams 12 as well as 9. So that's going to be a 4v4 situation now. So 12 players near each other, and they'll have to play it pretty safe. NNE के players यहाँ पे एनएनी यश यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सराउंड होते हुए, यहाँ पे हो सकती है उनके ऊपर कुछ फायरिंग शुरू। उन्होंने न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा को तो स्पॉट कर लिया है, पर देखना है क्या वो नॉक दे पाएंगे। बिल्कुल दे पाएंगे, पहले ही बर्स्ट पे उन्होंने दिया उनको सीधा नॉक, और यहाँ पे सीधा ड्रॉप किया है बाहर की तरफ। टीम 12 के 2-3 मेंबर्स यहाँ पे हो चुके हैं डाउन। अब सिर्फ एक ही बचा है जो कि है रिफ्लेक्स। अपनी टीम की तरफ से देखना पड़ेगा कि क्या ये जाके अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे या नहीं। एनएनई के भी 3 ही प्लेयर्स यहाँ पे एक और हो चुके हैं नॉक। यश फिलहाल ब्लीड आउट सिचुएशन में है। 9 टीम नंबर 9 भी यहाँ पे आ चुकी है अब लड़ाई करने, जिन्होंने किया बट्टू वाईटी को नॉक। सिर्फ डैजल बचे हैं अब अपनी टीम की तरफ से। टीम नंबर 12 का रिफ्लेक्स और स्पेक्ट्रा, सिर्फ ये 2 लोग अभी जिंदा। रिफ्लेक्स देखना पड़ेगा कि जाएंगे स्पेक्ट्रा को रिवाइव देने या नहीं। And that's going to be Reflex taking one person out right away. Gonna reload. AKM is the gun that he has right now. Just 2 members, Dazzle and Battu IT. Battu IT bleed out situation. Dazzle is the only one remaining. Team number 9 के members यहाँ पे आ चुके हैं रश करने के लिए। देखना पड़ेगा रिफ्लेक्स कैसे हैंडल करेंगे ये 4v1 वाली सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रा भी शायद जाएंगे। Okay, that's gonna be him taking out one, and he will be finished off as well. Team number 9 getting an easy win in that fight. Doing the third party seemed out to be the best possible situation for them. Now let's look at El Pozo. There is team number 10 as well as team number 8 near each other, and probably are gonna get into a fight. So they'll have to play it safe. अगर वो लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे उन्हें पड़ेगी बहुत भर भर के गोलियां, और एक मेंबर अगर हुआ यहाँ पे नॉकआउट, दूसरी टीम को मिल जाएगा चांस स्लैमन मारने का। पर टीम नंबर 8 के मेंबर्स देखा जाते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्प्रेड हो रखे हैं। सो आई रियली फील लाइक दैट दे विल बी प्रोबेबली ट्राइंग टू अवॉइड द फाइट इन दिस सिचुएशन, दो इट इज स्टिल अ 4v4। पर वो यहाँ पे 2 मैन के 2 अलग अलग स्क्वाड्रंस में बैठे हुए हैं। Now we're finally seeing these teams, jumping towards the safe zone. We're probably gonna see some fight maybe between team 7 and team number 4. Team number 4 यहाँ पे I believe it's team Quiz, जो कि पिछला मैच जीती थी। देखना पड़ेगा कि क्या वो इस गेम में भी एक चिकन निकाल पाएंगे या नहीं। टीम नंबर 7 यहाँ पे सिटी के बीच से निकलती हुई जाएगी। टीम 4 के मेंबर्स हैं इस सिटी में, बट आई डाउट दिल बी टेकिंग एनी फाइट्स और नॉट, क्योंकि वो ऊपर वाले ब्रिज की तरफ से गए। देयर इज नो ऊपर और नीचे वाला ब्रिज, तो देयर जस्ट दैट वन ब्रिज, वन लॉन्ग ब्रिज। आराम से निकलते हुए दो उन्होंने स्पॉट कर लिया है टीम 4 के मेंबर्स को। लेट्स सी इफ टीम 4 विल गो फॉर द चेस। माय गुडनेस, कैसे बग्स है इस गेम के अंदर। Team number 4, they've got absolutely no interest in going in for the chase. Gonna just take, they're just gonna hold on to their positions. Gonna take the loot that they can find. They're gonna enjoy. They're gonna have the time for now. But looking at Picardo, there is team number 13 fighting with team number 14. And they are not having time of their life because team 13 is in the open right now. ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब। उन्हें अपने मेंबर को भी रिवाइव देने जाना पड़ेगा। काफ़ी गोलियां चलती हुई इनके ऊपर। क्या ये रिवाइव दे पाएंगे विट्स को? बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहेगी, पर यहाँ पे सीधे शॉट्स उनके मुंह पे पड़ते हुए, और वो खुद भी हो चुके हैं डाउन इस सिचुएशन में।
विड्स की काफी ज्यादा लो एचपी, यहाँ पे स्मोक वॉल्स क्रिएट हो चुकी है, विड्स यहाँ पे हो गए हैं रिवाइव। होली स्मोक्स मैन, होली स्मोक्स, क्या एचपी है उनकी, क्या एचपी है, इज लिटिल जस्ट वन बुलेट अवे फ्रॉम बीइंग फिनिश्ड ऑफ। मीनवाइल टीम 14 का एक मेंबर जा चुका है, पीछे की साइड किया है उन्होंने एक नॉक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉक कह सकते हैं हम इसको उनकी टीम के लिए। और यहाँ पे अब टीम 13 की एक मैक्सिमम ओपी की पड़ती हुई यहाँ पे दो अलग अलग जगह से गोलियां, टीम नंबर 14 इजी विन फॉर देमसेल्व्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लैंक देते हुए और यहाँ पे फाइट को जीतते हुए। ब्लू जोन यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है। एल्पोजो में टीम नंबर 10 के सिर्फ दो ही मेंबर बचे जिनमें से एक हो चुका है नॉक, और यहाँ पे फाइट हमें जीतती हुई दिखी है टीम 8 के मेंबर्स ने, जो कि एक्चुअली में डिवाइडेड थे बट देयर स्ट्रैटेजी वर्कड आउट परफेक्टली वेल फॉर देयर टीम। दो बंदे जरूर नॉक हुए थे प्रोसेस में, लेकिन फिर भी उनके दो बाकी बचे हुए मेंबर्स उनको जीत दिलाने में वो पता है कामयाब। यहाँ पे जीत चुके हैं वो फाइट एल्पोजो की, तो अब वो जाएंगे जोन के अंदर। जैसे ही नया जोन यहाँ पे बनेगा, या हो सकता है अगला जोन उन्हीं के ऊपर बन जाए, सो हु नोज। We still got 12 teams remaining right now, 42 players alive। मेरा मार बहुत ज़्यादा स्लो चलता है ये वाला गेम, का अर्ली फाइट्स में देखने को मिलती नहीं है इस मैप पे। आराम से ही खेलना प्रेफर करती है यहाँ पे टीम्स, और हिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक्स है। इट्स अ मैप फुल ऑफ हाई राइजिंग माउंटेन्स, जिनके ऊपर आप चढ़ के काफ़ी अच्छा विजन ले सकते हो एरिया का, एंड दैट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट टीम्स लव टू फॉलो। But yeah, this game is highly zone dependent. Like in the Erangel, you can arguably say that that the importance of zone is not that high. But in this map, it definitely is, because it might be possible that you are at one side of the mountain and then you've got to go to the other side and you cannot climb that hill. So those kind of situations happen a lot in Miramar, especially in those end zones, so you always want the zone to be forming near you, or at least to a place where you can reach without getting in the sight of enemies. So but that's what I think personally. That's something that's my personal opinion though. यहाँ पे हम स्पेक्टेट कर रहे हैं टीम नंबर 9 को, काफ़ी ज़्यादा ओपन में है ये, बट देव गॉट एब्सोल्युटली नो वन अराउंड देम, सो इट्स बेसिकली फाइन राइट नाउ। आराम से घूमते हुए ये लोग ड्रॉप्स को चेस करते हुए, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ टीम नंबर 7 ले रही है एक फाइट हमारी टीम नंबर 3 के साथ, 7 SPT के मेंबर्स के साथ। एक ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं और डेविल ब्रो अभी हो रखे हैं ब्लीड आउट सिचुएशन में। टीम इनके पास हाई ग्राउंड है, सो दैट्स वन गुड थिंग फॉर देम, बट दे डू नॉट हैव द नंबर्स एडवांटेज, सो पुशिंग अगेंस्ट दिस टीम विल बी not advisable, as since the hill has, so yeah, they've got enough time to revive their own teammates, but since they do not have the numbers advantage, they will not be able to stop the flanks very effectively। और यहाँ टीम 7 के मेंबर्स बहुत अच्छा रश मारते हुए इनके ऊपर, देखना पड़ेगा कि क्या वो फिनिश निकाल पाएंगे इनके कि नहीं, बिकॉज यहाँ वी कैन क्लियरली सी फ्रैगी और डेविल ब्रो दोनों ही फाइट में है। फ्रैगी यहाँ पे जाएंगे 1v1 सिचुएशन में, काफ़ी अच्छा डैमेज देते हुए, देखना पड़ेगा कि क्या फिनिश निकालेंगे। यस, ही मैनेजेस टू नॉक वन मेंबर डाउन ऑफ टीम जेनेक्स, दैट्स गोना बी दर्द finished up right away, making a 4v2 situation into a 3v2 situation. He needs to heal up as well. That's a very good dent on the armor of team Gen X, because यहाँ पे अब वो एक मेंबर शॉर्ट है, तो उनको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक और मेंबर उनका गया यहाँ पे डाउन, फिर हम कह सकते हैं कि एडवांटेज हो जाएगी आर्ग्यूअली टीम 7 SPT के पास, क्योंकि एक मेंबर को देना पड़ेगा रिवाइव और एक ही मेंबर फिर उसके बाद बचेगा। यहाँ पे फ्रैगी ने ली अपने लिए थोड़ी सी लूट, गेटिंग द रीफिल फॉर हिज सप्लाईज। Now we'll have to see what approach Team 7 takes. They did show an aggressive approach, but that did not turn out well for their own team. Now,
We just have to wait it out and see what they decide to do so. But meanwhile, Team 7SPT will be the one who will be deciding to retreat. They do not want to take this fight anymore. They got one kill out of it and they're like, alright, we're out of here, boys. Or they just want to go and flank. Maybe. But it's going to be Team 7 trying to get in some damage, trying to get some knocks, though they're not being able to. Fraggy is still there. I don't know what he's doing right now, but he's still there. Maybe he's reconnecting and that's going to be extremely bad. यहाँ पे डेविल ब्रो की व्हीकल का भी एक टायर उड़ा चुके हैं टीम नंबर 7 के लोग. सो देखना पड़ेगा कि क्या रहेगी अब सिचुएशन, because Devil Bro is probably heading towards team number 4 and that's also a full form and strong team. Fraggy is still sitting there and okay, team 7, they did not notice Fraggy being there and they're retreating back to their own location that they were holding on to. So this fight proved out absolutely useless for them because they lost one of their members and they were able to trade it for none. So they'll be just changing their positions. They will be deciding to jump back to their own. They'll be deciding to changing their positions and jumping into the safe zone. Holy smokes, my tongue, man. Meanwhile, team number 8, they just quickly jumped towards the loot, took it, and now are retreating back. Looking at the teams right now, 12 teams still remaining, 38 players alive. We've just seen 4 finishes till then. And just as I said, that Miramar mid game बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है ये पूरा का पूरा गेम. यहाँ पे ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता नहीं है हमको. बट यहाँ पे टीम नंबर 14 की अगर हम बात करें तो दे आर द वंस हु आर फेसिंग एग्रेशन फ्रॉम टीम नंबर 9 बिकॉज 2 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं डाउन. यहाँ पे एक फिनिश देने के लिए जाने की कोशिश में ब्रैक्स को पड़ेगी बहुत सारी गोलियां. यहाँ पे काफ़ी स्प्रे करते हुए छोटो वीम, बट ही वॉज अनएबल टू गेट द नॉक एंड दैट्स गोइंग टू बी हिम टेकन आउट. आरयू के मेंबर्स अभी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे अपने किल सिक्योर करने की. 3 टीमें हैं यहाँ पे, 9, 11 और 14. डिएगो और गामा ये दोनों हो चुके हैं नॉकआउट. तो यहाँ पे ब्रैक से भी करेंगे कोशिश रिवाइव देने की. Brax is like the going all out title holder of the previous match who got 5 finishes and he has, how many kills he has? I don't know. I can just see team finishes right now. Okay, he has 2 finishes of the 4 that his own team has. Meanwhile यहाँ काफ़ी पीछे से गोली पड़ती हुई ILX होजो की 3x M4 का काफ़ी स्टेबल स्प्रे दिखाता है ब्रैक्स, बट द बुलेट्स नॉट कनेक्टिंग दो. डिएगो यहाँ पे हो चुके हैं फिनिश, सो विल हैव टू जस्ट सी हाउ दे हैंडल द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. यहाँ पे होंगे नॉक AK फॉर एवर भी. टीम नंबर 14 बीइंग इन द एडवांटेज राइट नाउ, पर ब्रैक्स ने किया पीछे से फिनिश उनको. ही विल बी सेविंग द लाइफ ऑफ हिज ओन टीममेट्स. Meanwhile, he's still trying to get the revive into AK forever because टीम नंबर 16 के भी मेंबर्स यहाँ पे अब उन पे चलाएंगे गोलियां और उनके पीछे है टीम नंबर 11. No, the basically retreating at this point. यहाँ पे जोन एक और बार फॉर्म हो चुका है और अब हम यहाँ पे पूरा एग्रेशन देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट हर टीम से, क्योंकि सारी टीम्स यहाँ पे है जोन के सदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न ओरिएंटेड जोन के सदर्न पार्ट में आएंगे सारी टीम्स. दिल प्रोबेबली कोलैप्स अराउंड द साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट, जिस डायरेक्शन में ये लोग हमें जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे फाइट चलती हुई टीम नंबर 8 की
टीम 7 के अगेंस्ट फोर्जा होराइजन काफ़ी ज़्यादा लो एचपी में, देखना पड़ेगा कैसे सरवाइव कर पाएगी टीम नंबर 7 टीम नंबर 8 के अगेंस्ट 4v3 सिचुएशन है यहाँ पे। टीम एट डेफिनेटली हैज़ द एडवांटेज, बहुत ही अच्छा नॉक देते हुए मेकिंग दिस सिचुएशन अ 2v4 बिकॉज दो लोग हैं यहाँ पे डाउन, तीन लोग यहाँ पे हो चुके हैं डाउन। बैंक शॉट इज द ओनली वन रिमेनिंग राइट नाउ, लेट्स सी विल ही बी एबल टू सेव हिज ओन टीममेट्स और नॉट, बिकॉज यहाँ पे फोर्जा होराइजन, जेनेक्स अल्फा और ब्लेस बहुत ही अच्छा प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमको 2 किल्स कर लिए उन्होंने सिक्योर। अब यहाँ पे सिर्फ बैंक शॉट और मलाना मलाना क्रीम बचे हैं। क्या वो ये 2v4 सिचुएशन में जीत पाएंगे? सीम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मॉली भी किया है मलाना क्रीम, स्टिल ट्राइंग टू गेट हिज एचपी बैक, नेडिंग कंटिन्यूसली होती हुई यहाँ पे। यहाँ पे सारे अभी ग्रेनेडिंग करे जा रहे हैं टीम नंबर 7 के मेंबर्स, काफ़ी अच्छे नेड्स आते हुए, बट दे नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर any kill from the grenades. They're not able to get any knockouts in the process. So that's gonna be it for that fight. बैंक शॉट और मलाना क्रीम नहीं बचा पाए अपनी टीम को वहाँ पे टीम नंबर 7 से, एंड दे विल बी गेटिंग द लूट। बट okay, did they lose 2 members? No, they already lost their 2 members, so yeah, that was a 3v4 situation though, so yeah, they did lose one of their member in that process. Now they'll be taking all the loot they can, they'll be strengthening themselves with all the supplies. Now only 8 teams remain in front of us. Team number 9, the members of team RU, they'll have to jump back into the zone as well. Another zone has formed and they'll be taking a lot of damage from the blue zone now, and they're the only team that are outside the safe zone. It's team ILX trying at the edge of the zone. They'll be moving into the safe zone as well. This is like one of the last circles. It is fourth circle of the game and will probably get the top 3 in this circle, or at least the top 5, because 3 of the 8 teams will be getting eliminated because they're probably going to collapse at the same possible point. यहाँ टीम क्विज पूरा सेफ गेम खेलते हुए पूरे टाइम से, एंड अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई करके भी बैठे हुए हैं. So they've got absolutely no problems, and then my goodness, parking skills OP. Though in terms of supplies, I really feel like that they do not have good amount of them, but still that's going to be the bus finally stopped. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉक दिया था उन्होंने, एरो को नॉक कर चुके हैं टीम नंबर CE के मेंबर्स. सो that's basically a 1-for-1 trade. No, arrow has not been knocked out though. यहाँ पे एजियो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्रेनेड था यहाँ एरो का, किया उन्होंने एक नॉक. ILX की टीम भी ऊपर हमें हिल्स पे देखने को मिल सकती है. दैट्स गोइंग टू बी एजियो सिक्योरिंग 1. ILX के मेंबर्स वहाँ पहाड़ी के ऊपर बैठते हुए काफ़ी अच्छी पोजीशन में हमें दिख रहे हैं. That's going to be a full 4-man ILX team. टीम नंबर 23 लिटरली 2 जगह से फंस चुकी है. OP Devil is the only one remaining along with Arcs from his team, and Arcs, I don't think so he can come out in the open because we've literally got 4 to 5 different teams around each other now. Just 7 teams remaining. That's going to be Forza Horizon taking out one member. That's going to be Quiz Mystic.
of the picture. One member of Team 4 is already out. That's going to be okay. That's going to be a 2v1 situation now. Finally, Horizon will be taken out without any major difficulties. Though they did lose a member in the process, but now that's basically it. फ्रैगी यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोजीशन लेके टीम आरयू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, ट्राइंग टू ब्लास्ट देयर कार. यहाँ पे आरयू के मेंबर्स ने करी रिटर्न फायरिंग उनके ऊपर. देखना पड़ेगा क्या रहेगी सिचुएशन अब इन टीम की. एक और जोन बनने वाला है कुछ ही सेकंड्स में, एंड दैट्स गोना बी द जोन. टीम नंबर टीम ILX बाहर है जोन के और IT बाहर है जोन के. यहाँ पे फ्रैगी को पड़े बहुत ही ज्यादा शॉट्स, पर ट्रेड में उन्होंने ब्रैक्स को जरूर करवा दिया है नॉक. पर यहाँ पे डेविल ब्रो हो चुके हैं नॉक्ड आउट. फ्रैग ने फटाफट से लगाई मिड किट, जाएंगे रिवाइव देने अपने टीममेट को. देखना पड़ेगा स्मोक नीचे तो नहीं गिर जाता, क्योंकि काफ़ी चांसेस है गिर जाएगा. और ब्रैक्स यहाँ पे हो चुके हैं फिनिश. आरयू के टीममेट्स उन्हें रिवाइव नहीं दे पाए. टीम 7 SPT के सिर्फ 2 ही मेंबर्स बाकी काफ़ी अच्छा गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको. क्विज के भी 3 मेंबर्स बचे हैं अभी, अपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन को सिक्योर करके बैठे हुए हैं. वेयर एज द टीम ILX हैव ऑल द 4 मेंबर्स रिमेनिंग. IT के जो एक मेंबर है, IT के 2 मेंबर है. एक बहुत ही ज़्यादा फायरिंग लेते हुए शिजुका, बट नन ऑफ द शॉट्स वर कनेक्टेड. सो दैट्स गोइंग टू बी हिम सेविंग हिमसेल्फ. मीनवाइल यहाँ पे वही रिटर्न फायरिंग टीम 3 की तरफ से थोड़ी सी स्मोक वॉल क्रिएट करने की कोशिश जूका के द्वारा. यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या वो निकल पाते हैं इस सिचुएशन से या नहीं. बहुत ज़्यादा शॉट्स खाते हुए will be forced to use the health kit right now. The 6 teams remaining, only 6 teams, top 6 मिल चुके हैं. हम यहाँ पे टॉप 5 में कौन कौन पहुंचना है ये देखना पड़ेगा अभी. We still have team 3, 4, 9, 11, 16 and 23. 16 और 23 के सिर्फ एक मेंबर ही बचे हैं. नहीं, 16 के all 4 members are alive, but they're all almost out of the safe zone, so they'll have to jump in, they'll have to reposition themselves, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बाकी सारी टीम्स ने एक एक पोजीशन अपनी ऑक्यूपाई कर ली है. सो देखना पड़ेगा क्या उस टीम के मेंबर सेफली जोन के अंदर आ पाएंगे या नहीं. यहाँ पे शिजुका still taking a ton of firing. Meanwhile, the members of team 7 SPT अपनी वो हाई ग्राउंड वाली पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं. शिजुका नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन से बाहर, एंड प्रॉबेबली इनकी व्हीकल भी हो जाएगी अब इस पॉइंट पे. ब्लास्ट देखना पड़ेगा कैन ही सर्वाइव दिस व्हीकल ब्लास्ट और नॉट, बिकॉज सीम्स टू बी रियली रियली डिफिकल्ट. Okay, so he did not take any damage from that vehicle blast, but yes, अब उनको जाना पड़ेगा जोन में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीम नंबर 4 हमें दिख रही है जोन के अंदर. बाकी सारी टीम्स हैं जोन के बाहर. टीम ILX के फुल 4 मेंबर्स, तो they've got 4 finishes till now. Let's see how many more can they grab out of this situation, because they are taking some lot of firings, and as soon as I said their full 4 members strong, they lost one of their members by the hands of team number 9, that is team RU. It's going to be a 2v3 v2 v2 v3 situation, so only 2 teams having 3 members, rest all of them with 2 members. So we've got the top 5 finally in front of us. That's going to be 7 SPT, Devil Bro taken out. 7 SPT have lost Devil Bro yet another time. So Fraggy को फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पे revive देने के लिए. I really feel like that he should change his position at this point. यहाँ पे
टीम क्विज के एक मेंबर हो चुके हैं नॉक zombie एंड शिजुका दे आर स्टिल सर्वाइविंग शिजुका नीड्स टू चेंज दिस पोजीशन एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे आ रहा है अब जोन और ये जोन देगा बहुत ही ज्यादा डैमेज क्विज आरो की यहाँ पे हो चुकी है फायरिंग चालू शिजुका हो चुके हैं जोन के बाहर नॉक इट्स जस्ट लेफ्ट ऑन ज़ॉम्बी कि वो कितने अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं टीम आरयू के सिर्फ दो ही मेंबर्स जिनमें से आरयू गामा है ब्रीड आउट और वो भी ब्लू जोन के बाहर विल फाइनली मेक इट इनसाइड दो वी हैव गॉट ओनली 4 teams 9 players remaining in total and another zone is on team quiz let's see if quiz actually will be able to get another chicken in this match or will someone stop their win streak with looking at the current situation, it seems that they'll get another chicken dinner right now. They did just get ILX member knocked out, and that's going to be another member being grenaded down by the members of Team RU. So यहाँ पे लिटिल वी कैन सी एट एनी प्लेस हर जगह पे फाइट होती है ILX के सिर्फ दो ही मेंबर्स बचे हैं अब Quest team again with the numbers advantage in this game. यहाँ पे zombie भी काफी कोशिश करते हैं नेडिंग करने की is not being able to get a good aim though will be taking damage from his own grenade. यहाँ पे ILX के एक और member that is Hojo यहाँ पे हो गए हैं knock. Sonu is using the bandages. I'm not quite sure why he's not using the first aid kit. Oh, that's a grenade right next to them. And Hojo will be finished off. Man, जैसी वो grenade मुझे दिखा I was like, all right, right. I believe that's it. So for that, यहाँ पे टीम 4 के एक मेंबर हो चुके हैं नॉक आउट दैट्स गोइंग टू बी रिफ्लेक्स WNL. एरो ने कर लिया है ज़ॉम्बी को स्पॉट तो देखते हैं वो क्या उनको फिनिश करने में रहेंगे कामयाब बिकॉज दैट्स गोना टर्न इनटू अ 1v1 सिचुएशन. He's basically zone camping right now, and that's going to be Arrow changing his position as well right now. Zombie यहाँ पे हो चुके हैं फिनिश आर्यू गामा ने उन्हें किया नॉकआउट एजियो भी यहाँ पे हो गए हैं नॉकआउट सिचुएशन में अभी देखना पड़ेगा क्या वापस आ पाएंगे यस आराम से वापस आ गए कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हुई 8th zone है हमारे सामने and that's going to be ILX Sonu finished off amazing grenades coming in यहाँ पे क्विज के सिर्फ दो मेंबर्स जिनमें से एक है नॉकड आउट आरयू की टीम के दो मेंबर्स हैं यहाँ पे आरयू गामा और एक है फॉरएवर 1v2 सिचुएशन आरयू के दो मेंबर्स देखना पड़ेगा कौन सी टीम निकलेगी इस गेम में विनर बिकॉज इन द लास्ट वन इट वाज quiz and this time it is going to be team RU and RU की टीम पिछली बार आई थी सेकंड इस बार वो आई है फर्स्ट क्विज की टीम लास्ट टाइम आई थी फर्स्ट इस बार आई सेकंड सो दीज टू टीम्स आर जस्ट अमेजिंग मैन आई जस्ट लव टू सी देम प्ले ऑल ऑफ देम आर जस्ट अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हुए सारे आगे बढ़ते हैं इस गेम के अंदर बट दिस वन has been won by team RU. उनके micro outplays came out to be on top and helped them get the win in this game. 2-man की टीम लेके काफ़ी देर से वो लोग संभाले हुए थे और उसके बाद एंड में जाके अब उस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न किया और निकाल गए चिकन डिनर. So that's going to be team RU with in total of 6 for 10 3 13 finish points man 13 kills secured by this team. Team Quiz securing second place with 5 kills while ILX will be third with 4 kills. बाकी पूरा leaderboard हमारे सामने. I'll be taking quick screenshots of these matches. Moving towards the start.